ओके स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन में हम आपकी प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स का जायजा लेंगे। तो इसके लिए हम आपका वेट कर रहे हैं कि आप जैसे ही लॉग इन करते हैं और अपनी रिपोर्ट प्रेजेंटेशन को शो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ, क्या हाल है? आप ठीक हैं? जी हनीफ, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। आप सुनाए सर, कैसे हैं? बेटा आप अपनी प्रेजेंटेशन करो और आप अपना प्रेजेंट कर लो वर्क। ठीक है सर। सर पहले रिपोर्ट भी दिखा दिए जैसे प्रेजेंटेशन शो कर दी। इसको स्लाइड मोड में कर लें, स्लाइड मोड में कर लें। अभी तो आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड मोड में नहीं नजर आ रहा। आप इसे स्लाइड मोड में कर, कीबोर्ड पे F5 प्रेस कर लें। सर सॉरी, कटिंग आ रही है, मैं रीज्वाइन करता हूँ। प्रेजेंटेशन में कर लें, स्लाइड शो में जाके स्लाइड शो में चले जाए। जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए जी थे, सर। कनेक्ट करें दोबारा जी से। सर, वो सर एक्चुअली मेरे जो है ना आपकी कटिंग आ रही थी आवाज़ में, इस वजह से मैंने दोबारा ज्वाइन किया। कोई बात नहीं, आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। ठीक है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today my topic is mobile cloud computing. My name is Mohammad Anif Nasir. I am student of MSCS from Hamdard University. टेबल ऑफ कंटेंट में मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद कि मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों यूज़ होती है। नेक्स्ट है मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग बैकग्राउंड, और सिमिलरली डिप्लॉयमेंट मॉडल्स और इसके सर्विसेज मॉडल्स और आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर के बाद इसकी प्रैक्टिस भी मैं बताऊंगा, और उसके बाद फ्यूचर डेवलपमेंट और कंक्लूजन। लेट्स स्टार्ट। Mobile cloud computing is also called MCC. M mean mobile, C cloud, and C computing, which is used to show your cloud on the mobile devices. MCC storage and processing of data is done on cloud, and mobile devices is used such as media display. Cloud computing is a computer system available on demand, including safe storage of data and computation without direct user involvement. In the starting, cloud computing was done only from desktop computers, laptops, and servers. This is the diagram
In this diagram, cloud computing, there are four types of computing clouds are used: private cloud, public cloud, community cloud, and hybrid. Community cloud is not added here. In clouds, we use server and we store the data on the server and through desktop, mobile, by providing the application to store the data on the database. Nowadays, mobile cloud computing is also used. MCC is the combination of both mobile network and cloud technology. MCC is used by users, service providers, and companies. MCC is an infrastructure where storage and processing is done outside of mobile devices. It means that we use mobile devices for connectivity, and all data will be stored on the cloud. In the diagram, I present that cloud is connected to the mobile through router devices and 3G and 4G network. It can also be used by the host and by also the server providers. All the mobile devices faced many challenges like battery life, storage, and bandwidth, but it is easy to use due to its mobility. Users can use cloud computing from their mobile and store data without using desktop or laptop. MCC provides to subscribe computing, data storage, and processing services through mobile devices. Mobile cloud computing background. In the 1980s, 2G network was developed for communication between machine to human. Packet data was also added to this type of network via GPRS protocol. The 3G network, in this network, there was a mixture of packet and circuit switch networks. And at the end, nowadays, we are using 4G network. Different cloud deployment models. Cloud deployment model is given here that we use as a public cloud, private cloud, community cloud, and hybrid clouds. In public cloud, there was cloud used by the public, and here security is less. But in private clouds, there is security, high-level security, and hybrid cloud, which are both mixture of private cloud and public cloud. MCC service models, there are three models. One is SaaS, PaaS, and IaaS. In SaaS, SaaS, software as a service. Server, in this service models, server, storage, and network are used. OS and middleware package softwares, or it is used by the end user. PaaS, platform as a service. In this, we are using the services of server, storage, network, operating system, and middleware. It is used for the software developer. And as infrastructure as a service, server, in this services we use server, storage, and network, and it is used for the infrastructure architecture. Architecture of mobile cloud. In this diagram, you can see that cloud is using storage, cloud platform, cloud services, and cloud infrastructure. It is transmitted by the base transceiver station, and base transceiver station is connected with the smartphone, tablet, PDA, and mobile devices. User can access through their mobile devices to the clouds. Characteristic of mobile cloud. State preservations, resource fragmentation, network optimization, data synchronization management, and provenance-aware access mobility. Future development of mobile cloud. Mobile cloud industry. Mobile cloud is used for the industry development and growth patterns. There is a much space available for the growth.
access to help companies make decisions. Banks also shifted to the mobile cloud, so therefore mobile cloud is maximum used at different branches and different companies. Banks user can access their data and their account details through their mobile devices. Although there is issue in between speed, security, and battery volume, which may be in future better decisions. From this presentation, plan is mobile cloud computing is a new field which opens many ways for the developers and cloud providers. Mobile devices have many types and also use different operating systems. Developers can easily create applications for different services, devices, remove error very fast from the applications. Mobile devices importance is also increased due to its mobility. We have discussed on different aspects of mobile cloud computing and found that it is a secure and reliable computing. Different companies have introduced different clouds, techniques, and computing which can be operated from mobile devices. Mobile cloud models offer more healthy security control than their traditional counterparts at the infrastructure level. This is the end of my presentation. Thank you very much. If you have any question, please ask. ओके स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। मेरे अलबत्ता 2-3 क्वेश्चन हैं वो मैं पूछूंगा, लेकिन पहले स्टूडेंट अनस आप पूछ सकते हैं कोई सवाल। मोबाइल आर्किटेक्ट पे ले जाएं, मोबाइल जो आर्किटेक्ट का वो था ना स्लाइड, उस पे ले जाएं। जी अनस आपका कोई सवाल है? अनस आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अनस आपका कोई सवाल है? चले अनस का कोई सवाल नहीं है। शहरोज आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? शहरोज से पूछते हैं। शहरोज अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो ओके, थैंक यू शहरोज। अच्छा मेरा सवाल ये है कि मोबाइल फोन जो है या मोबाइल डिवाइस जो है ना, ये चूंकि मोबाइल है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो अगर एक बेस ट्रांसीवर जो है उससे उसका यानी किसी और दूसरे बेस ट्रांसीवर से अगर वो कनेक्ट हो जाती है तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर क्या कहती है, यानी मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग का पैराडाइम क्या कहता है? सर इसमें ये है कि मोबाइल डिवाइसेस को कनेक्ट करना क्लाउड के ऊपर कनेक्ट करना होता है, तो इसके लिए आईडी और पासवर्ड अवेलेबल होता है। आईडी और पासवर्ड किसी भी मोबाइल डिवाइस से जब वो इंटर करेगा तो वो उस क्लाउड को लॉगिन हो जाएगा, और लॉगिन करने के बाद अपनी सारी इंफॉर्मेशन सेव भी कर सकता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग भी जो भी डाटा सेव करना वो कर सकता है। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो है वो इंडिविजुअल यूजर को दिया जाता है, और जिसके पास वो डिटेल अवेलेबल होगी तो वो उस क्लाउड को एक्सेस कर सकता है। नहीं, सवाल ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल एक टावर आपके पास इस डायग्राम में नजर आ रहा है। जी सर। अब ये चूंकि जो है वो ये टावर जो है ये कनेक्ट कर रहा है क्लाउड स्टोरेज को। अब अगर ये टावर बेस टावर 1 है, इसी तरह का एक बेस टावर 2 भी मौजूद है। जी सर। अब अगर एक स्मार्टफोन जो है वो लेट से मूव करता है रीजन में और बेस स्टेशन 1 पे वो पहले कनेक्टेड था, उसके जी सर, वो इसी तरह है कि मोबाइल जब एक टावर से डिस्कनेक्ट होकर दूसरे टावर से कनेक्ट होता है तो वो उसकी कनेक्टिविटी जो है वो अवेलेबल रहती है, वो डिस्कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि एक टावर से दूसरे टावर में जो उसके सिग्नल हैं वो एक टावर के जो ही वीक होते हैं तो अवेलेबल जो हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई सिग्नल जो है उसको मोबाइल ऑटोमेटिक उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इस वजह से ये हमारा कनेक्शन बाहर रहता है और जो है वो कंटिन्यू सिस्टम अपना काम शुरू करता है। ठीक हो गया, चलें बेहतर हो गया, बेहतर हो गया। अच्छा सैटेलाइट भी आपने इसमें शो किया हुआ है, सैटेलाइट का थोड़ा फंक्शन बता दें। जी सर, वो जिसी तरह के जो सैटेलाइट डिवाइसेस हैं हमारे पास, तो उसके थ्रू अगर नेट हम कनेक्ट किया हुआ है तो वो सैटेलाइट के थ्रू भी ये कनेक्टिविटी हमारी उसी नेट मोबाइल डिवाइस है उसके साथ कनेक्टिविटी बाहर रहेगी।
और वो क्लाउड को असेस कर सकेगा। दो फायदे आपने बताए कि एक तो स्मार्टफोन जब क्लाउड से हम कनेक्ट करेंगे तो स्टोरेज का फायदा आपने बताया, दूसरा फायदा आपने जो है वो बताया कि इसमें जो है वो चूंकि क्लाउड पे प्रोसेसिंग होगी तो मोबाइल फोन में प्रोसेसिंग कम होगी, क्योंकि मोबाइल डिवाइसेस आमतौर पे बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस नहीं कर पाती। इसके अलावा सर इसमें हमें नज़र आता है। जी सर, इसके अलावा भी बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मोबाइल जो है वो मोबाइलिटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है। एक सिस्टम, एक जगह से आप दूसरी शहर जब जाते हैं तो उस वक्त भी आप सेम क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब डेस्कटॉप हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने डेस्कटॉप अगर ऑफिस में है या होम में है तो वहाँ पे बैठ के ही उसको आप क्लाउड को एक्सेस करेंगे, अदरवाइज आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। कोई ना कोई सिस्टम आपको रिक्वायर्ड होगा कहीं ना कहीं पे। लेकिन मोबाइल ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी आप यूज़ करते हैं और उस वक्त भी असेस करके अपना काम कर सकते हैं। ओके, चलें ये तो अच्छा अच्छा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, अगर नहीं है तो हम फिर हनीफ आप अपना ये प्रेजेंटेशन बंद कर दें और अपनी रिपोर्ट ऑन कर लें ताकि हम रिपोर्ट भी देख लें एक दफ़ा। प्रेजेंटेशन तो आपने ठीक है अच्छा सर। किया है और आपने अच्छा प्रेजेंट भी किया है। जी सर, मैं अभी आपको अपनी रिपोर्ट शेयर करता हूँ। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरे जो है वो शेयर हो रही है स्क्रीन। कोई बात नहीं, आप रिपोर्ट शेयर कर दें, यहाँ है आपके पास? जी सर, है, अवेलेबल है। है तो आप शेयर करें ताकि उसको भी देख लें। जी सर, स्क्रीन शो हो रही है सर मेरी आपके पास। हाँ हाँ, स्क्रीन आपकी शो हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी नहीं हो रही, दोबारा से शेयर कर दें। हाँ, हाँ, शेयरिंग मैंने अलाउ ठीक है की हुई है। सर। राइट सर। शेयर नहीं हो रही। आपकी रिपोर्ट में टेक्स्ट बहुत कम है। सर अभी शेयर हो गई है सर, क्योंकि आपने कहा था कि 10 पेजेस का हो, तो इसलिए ये मैंने 10 पेज का बनाया है। ये मोबाइल क्लाउड ठीक है, आगे कंप्यूटिंग है। आगे चलें। जी सर। आपका जी सर, टेबल ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स में कंटेंट रोके, आपने कितने सेक्शन बनाए हैं? 10 सेक्शन बनाए। इंट्रोडक्शन, 10 सेकंड। वाई मोबाइल, थोड़ा बड़ा कर दें जरा, नजर थोड़ा छोटा आ रहा सर प्लीज। है, पेज बड़ा कर दें जरा। हाँ, इतना बड़ा ठीक है। मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग बैकग्राउंड, डिफरेंट मॉडल्स और सर्विस मॉडल्स, फिर आपने आर्किटेक्चर दिखाया है, फिर की करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं और इसका फ्यूचर एक शो किया, ठीक है। कंक्लूजन और रेफरेंस बताया, आगे चलें। आपने एक पिक्चर भी लगाई है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपने बता दिया, चलें वेरी गुड, आगे चलें। एक डायग्राम में आपने शो कर दिया। अच्छा, इसमें आपने कम्युनिटी मॉडल नहीं दिखाया। कम्युनिटी मॉडल क्या अलग है? मतलब से मुराद ये कि वो डिप्लॉयमेंट मॉडल? नहीं सर, कंप्यूटिंग कम्युनिटी मॉडल भी इसमें शो होना है, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने शो किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उस चले वक्त मुझे आगे ध्यान में चलें, नहीं रहा कि आज वो। आगे चलें। अच्छा, वाई मोबाइल क्लाउड इज यूज्ड,
आपने डायग्राम भी दी है, ठीक है, डायग्राम की जी सर। फिगर नंबर डाली है डायग्राम में? जी सर ये डायग्राम में फिगर नंबर डाली है कि ये कौन सी फिगर है? फिगर नंबर नहीं डाली ना, नहीं फिगर सर, फिगर नंबर नहीं डाला। रेफरेंस में नहीं दिया फिगर के, फिगर 2 में ये चीज शो हो रही है। अच्छा चले आगे चले। क्योंकि सर उसी पैरे के अंदर ये डायग्राम मैंने दिया, तो इस वजह से वो रेफरेंस नहीं साथ ऐड किया। जब आप रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें थोड़ी सी चीजें रखनी होती है ख्याल में, फिगर के नंबर डालना होता है, फिगर का रेफरेंस। आगे चले। आपने डिफरेंट क्लाउड सर यहाँ बता दिए, लेकिन कहाँ से आपने ये इंफॉर्मेशन ली है? आप उसका रेफरेंस भी तो यहाँ बताते हैं, तो ये इस रेफरेंस से लिए। आगे चले, ये सर प्राइवेट क्लाउड को फिर के आप बारे में एक्सप्लेन बता किया, इसी दिए, तरह ठीक पब्लिक है क्लाउड आगे को चले। लेकिन ये मेडिका तो हार्डवेयर क्लाउड। क्लाउड से लिंक है ना, मोबाइल क्लाउड के रेफरेंस से आपने क्या चीज बताई है? जी सर, ये नीचे मोबाइल क्लाउड सर्विस मॉडल्स बता दिए सर, और उसके बाद ये आर्किटेक्चर मॉडल उसका जो, बताया। देखिए ये मॉडल जो है ये तो क्लाउड में भी है, और लेकिन जो कन्वेंशनल क्लाउड है और जो मोबाइल क्लाउड है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? सर उसमें मोबाइलिटी का डिफरेंस है कि आप मोबाइल को जो है ना कहीं भी जाके यूज कर सकते हैं, और उसका कहीं से भी आप कनेक्ट होकर अपना में ये है तो काम कर क्लाउड सकते हैं। कंप्यूटिंग ही, लेकिन आप इसको मोबाइल से एक्सेस कर रहे हैं, इस अंदाज में आप इसे जी देख। सर। ठीक है आगे जी चलिए। सर बिल्कुल। फ्यूचर में आपने क्या चीज बताई है, जरा समराइज करेंगे, फ्यूचर में क्या बताया आपने? सर फ्यूचर में मैंने ये बताया कि मोबाइल डिवाइसेस क्योंकि उनके बैटरी का इशू होता है और स्टोरेज का इशू होता है, इसी तरह नेट का इशू है, तो ये इशू आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होंगे कि बैटरी की लाइफ भी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो जाएगी। तो जब और सिक्योरिटी का इशू है, तो सिक्योरिटी का भी जो है फ्यूचर में बेहतर हो जाएगी, तो उसके बाद ये जो मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग है ये और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। आपके रेफरेंस भी अप्रोप्रिएट नहीं है, पता है? आपने रेफरेंसेस में जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ वो दिए हैं, क्या नाम है, और नीचे लेके आए रेफरेंसेस में। ये रेफरेंस सर ये रेफरेंस है। ये लिंक ही ज्यादातर दिए हुए हैं कि ये लिंक है, और इसमें जो प्रॉपर जो क्या कहते हैं रेफरेंसिंग स्टाइल होता है ना, वो भी आपने फॉलो नहीं किया। तो रिपोर्ट ठीक है सर आपकी। वो यहाँ पे रेफरेंस रेफरेंस तो सर इसी तरह है, लेकिन ये है कि यहाँ पे जहाँ से ये मैंने चीज उठाई है उसका यहाँ पे रेफरेंस इस टाइप से दे देना चाहिए था, जिस तरह ये बन रहा है फिर से है, तो आगे से बंद यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये मेंशन नहीं किया। तो ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो ये सर बंद है कि ये सिंगल लिंक से एडवांस लिंक मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये पहले टॉपिक था आप और उसका ये रेफरेंस। रिपोर्ट रिपोर्ट अपडेट करके भेजिए मुझे, और रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन जी जी। ईमेल में भेज दीजिएगा, फिर आपके मार्क्स हम लगा देंगे। तो इसमें आप तीन चीजें नोट कर लें, सर। अपने पास नोट कर लें तीन जी चीजें। सर। पहली चीज तो सर ये कि जितनी भी फिगर्स आपने इसमें ली है उनके फिगर नंबर लिखेंगे। ठीक है सर। फिगर नंबर 1 2 3 जितनी भी आपने फिगर 1 2 3, और उनको टेक्स्ट में भी लिखेंगे कि ये चीज फिगर 1 में है, ये चीज फिगर 2 में है। टेक्स्ट के अंदर भी फिगर लिखेंगे। राइट सर। पता चल जाए ना कि ये किस जगह से इस फिगर को प्राइमरली यूजर कहाँ देखना शुरू करे, किस जगह से लिंक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है सर, समझ आ गया सर। दूसरा पॉइंट जो है ना वो आपका वो ये है कि जो रेफरेंसेस है ना, इनका जो फॉर्मेट है ना आपने IEEE का करना है। तो IEEE का फॉर्मेट इंटरनेट पे मिल जाता है कि किस तरीके से रेफरेंस को लिखते हैं, और उसको फिर इन टेक्स्ट साइट भी करना है। एक मिनट मैं आपको लिख देता हूँ ये इसमें, ताकि आपके लिए ये जो है वो हो जाए। पहली चीज ये मैं आपको ये बताई कि आपने फिगर नंबर और उनकी इन टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है के जो टेक्स्ट में। इसके अलावा दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है रेफरेंसेस, IEEE स्टाइल रेफरेंसेस,
और इन टेक्स्ट उनकी जो साइटेशन है ना वो भी आपको इंसर्ट करनी है। ओके, तीसरी चीज जो ठीक है सर। करनी है वो ये है कि जो आपके जो प्रेजेंटेशन है ना उसमें स्लाइड नंबर नहीं लगे हुए। सही है सर। ठीक सर, वो मैं ऐड कर देता हूँ सर। अच्छा, जब ये तीनों काम आप कर लेना तो उसके बाद आप अपना सर बोथ बोथ डॉक्यूमेंट्स जो है वो मुझे ईमेल कर दें। जो मेरा ईडीयू का अकाउंट है, ठीक है, ईडीयू का जो अकाउंट है ना वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मैंने पोस्ट कर दिया, एक एक मैसेज पोस्ट कर दिया आपके ग्रुप में कि आपने, ठीक है सर। ठीक है, कि आप ये तीनों काम करके जब आप मुझे ये भेज देंगे अपनी दोनों चीजें, तो फिर मैं जो आपके क्या कहते हैं मार्क्स जो है ना वो लगा सर दूंगा। आपकी अच्छी ठीक है प्रेजेंटेशन, सर। मैं आपके मार्क्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट फुल ही हो जाएंगे, ठीक है। राइट सर, मैं आज ही आपको ये अपडेट करके भिजवा देता हूँ लेक्चर के लेकिन बाद। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ना उसमें अगर आप सर जिस ये तमाम इनकॉर्पोरेट करके चीजें भेजेंगे ना तो उस सूरत में महसूस होता है कि आपके इंशाल्लाह ताला फुल मार्क्स आ जाएंगे प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट में। लेकिन अगर उसमें कमी पाई गई तो फिर थोड़ा जो है ना वो मार्क्स कट जाएंगे। हाँ ठीक है सर, जो आपने पॉइंट नोट करवाए हैं ये इंशाल्लाह रिव्यू में करके आपको जल्दी रिपोर्ट भिजवा देता हूँ इंशाल्लाह, पूरे नंबर आएंगे। वेरी गुड। सर ओके, बहुत एक शुक्रिया मिनट सर। में देखूं इसके बाद जो है वो है मुनीब कह रहे हैं कि मैं करना चाहता हूँ। जी मुनीब मौजूद है? जी मुनीब, आप अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर यस दीजिए। सर। अच्छा सर, आपने शेयर के राइट्स दे दिए मुझे? जी जी, आप शेयर कीजिए, आपके पास शेयरिंग के राइट हैं। तो नजर आ रही है स्क्रीन आपको? स्क्रीन नजर आ रही है, आप अपना प्रेजेंटेशन ले अच्छा ओके सर, शुड आई स्टार्ट? नहीं नहीं, आप स्टार्ट अभी मत कीजिए। अभी आप अपना प्रेजेंटेशन जो है ना वो स्लाइड मोड में कर दें। जी और जी, मैंने कर दिया सर। हाँ, लेकिन ये मुकम्मल शेयर नहीं हो रहा, ये थोड़ा सा जरा टेढ़ा सा नजर आ रहा है। नहीं जी सर, ये ऐसी है, इसकी इसका देखिए लुक ऐसा है। अच्छा, पहला पेज दिखाएं जरा, पहला पेज टाइटल नजर नहीं आ रहा ना इसलिए बात कर रहे हैं। हाँ बस सही है। सही सही। हाँ, एक एक मिनट अभी आप टाइटल पे ले आए। हाँ, और एक मिनट सिर्फ वेट करें, मैं जरा पानी का एक गिलास ले आऊँ, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके श्योर सर। हाँ, एक मिनट सिर्फ वेट करें। ओके, बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके well, thank you so much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Well, the topic of my presentation is network age, and you always seen that network age is something that is very much familiar, and we all know what network age. So it is something that is not unique. It is very much formal, you can say. So, well, let me introduce myself. My name is Munib Khan, and I am a student of my master in computer and communication network. And as well, you know, like it's an era of information technology, and we are like in a state that everything that is we are gathering is something information. So network age, what is network age? So let me introduce the topic network age. So introduction: we are living in a world where we can access data from anywhere. Right now I'm connected with you through Zoom, so it is, I'm sharing something, I'm sharing the data, a list of information with you. So that is something, that information, I'm just giving you information. So an era where we are able to listen different terms like hashtag social networking, hashtag internet everywhere. So you are familiar with that terms, hashtag social networking, Facebook, and we are internet anywhere. Like you can just access internet everywhere. So this is something unique, and this is something that is like beyond our, like if you talk about in 90s, if you talk about in something that is, we are not familiar with the internet. Internet was something that is just going on, and it is a futuristic thing, but right now we are in future right now. So
This is an epoch of information technology where you're able to find everything accessible through mobiles or laptops. So right now I'm connected with mobile, I'm connected with laptop, so it's my choice. If I want to connect with the mobile, if I want to connect with my laptop, it's my choice. So we can like we can share information technology from anywhere. Okay, so there are millions of devices and copious data around the world. Like you can, like there are like millions of data device everywhere. Now you term like I remember we used to have IBM, we used to have Intel, like there was something devices going on when this for making it up. So right now, like there's so many brands, there are so many devices that we are connected through. And right now I'm connected with HP, something like devices that I'm connected with. So machine dependency are on a top. Living without internet is like living without an organ. Machine dependency are on the top. Like if you talk about machines, like we are bonded with machine. There's something that without internet, living without internet is something without organ right now. For example, there was different advertisement that has been made. Like there's someone has just closed the internet and everyone was shocked. Where's like the internet is not working? My internet is not working. Like there's different internet advertisement that has been made. Like internet is something that is a part of our organ. Without internet, we cannot live right now today. Even right now, if I'm just connected, I'm connected with the internet. So the topic that is covered in detail is network edge. We are concerned through countless devices, like we are connected through countless devices, switches, and router. Right now, if I'm connected with you right now, I'm connected with different devices. I'm connected with different switches. I'm connected with different router that I am able to reach with you through different ISPs. So that is a part of my introduction. Let's move towards the background. What is the background? Like in 1990s, I used to remember that when I was like I was not like you can call me like I was in my childhood. So I literally remember there was some concept of servers, websites, video editing, and it was something like the people talk about it. So it is made through video editing. It is made through something that is a part of server that usually people make server. Usually people make website. So in mid 2000, organization had developed a worker for their work application for email communication, financial application. Like in 2000, like we are able to listen that there's like email communication, like there was a like different forward, like I remember there was an email application that we are using as for exchange. And it was the first Microsoft had launched it like in the organization for the banking sector. Financial application we are used for ERP, Microsoft Great Plans. That was a part of 2000 that we are able to have like different sort of financial applications. We are able to that have communication. This is a style of email communication that we are able to do it. So the second thing, the most magnificent thing is that like there were different software and different applications were being made, like different software houses were developed at that time. So that is the background in 1990s and it was going on. And now if we are in the era of 2000, we all remember it was started with a hub. Like there was a hub and we connected different computer to get share information. So this was this was a start. This was how they improve data, transfer it between end devices. Like this was the start, and now that was switches, and there were like different sort of terms that we used to listen: DTE, DCE, modem user, M2 user. I used to remember that like Hamdard University was using a card system that was a modem user for the modem users. So this was something like as a background of the universe, like of that like network edge. Now moving further, let's talk about something network layer design. Okay, like core layer. Like if you talk about the core layer, like for example, I have been working at ISP. So like there are some cool. I used to see different routers, switches that are on the upper side of. People don't know about it, like how they are connected through internet and how they are literally. There's a lot of configuration. There are a lot of things that is going on, and we are doing on the back end. And that is true that core layer exists. So core layer is something that is the upper layer, and core layer where all the router and switches are connected and with the internet. There are different sort of protocols like we are able to actually implement over there. And right now, if I'm using switches, that there are switches that are layer 3 devices as well. So we are like there are term that has been usually we have router, we have switches. Now they are term use layer 3 devices that is a part of a core layer. So that is core layer. Now distribution layer where data center, if you talk about implementation of data center, there's right now term good aggregation switches. There
and it's distributed to the like data centers, and data centers just like aggregate to the access layer. That is a second layer. Access layer is something that is like we are connected to. For example, if I'm like in my organization, I'm connected with a laptop and Wi-Fi. It's just connected with some switches, like, and switches is that access layer, and it is connected with the layer, like it's called something that in terminology that is directly connected devices. Like it's not directly, but it's called access layer switches. And in the I used to remember when my teacher was teaching it, and he used it that to make it very much easy, you can say it like that. So access layer is something that is like a layer that is connected with the switches that are connected with distribution, and distribution layer are the most layers with the data center, and data center are the layer that is connected with the core layer that is back end of the router and switches, that is ISPs. Okay, so this is a network layer design. Now layers with different name. Right now you are not able to listen core layer, you are not able to listen access distribution layer, you are not able to listen the distribution layer, you are able to listen upper layer, you are able to listen edge layer, you are able to listen connectivity layer. So what is upper layer? Upper layer is something like different, like it's similar. It's something that is like that is upper layer is something that is core layer, that is like they within this layer there are multiple layer that exist. And for example, like I will call it it's called it like upper layer is something for example application layer, like this called the session layer. All the layers are included within it, in it, and that's why it's called upper layer. It's called core layer. Edge layer is something distribution layer. Connectivity layer is something that is physical layer, that is access layer. So this is a terminology right now they are using nowadays. So it's, don't have to be worried about it. You don't have to be like, what is this terminology? Now it's a new, you can say is a hashtag new definition of the layers that has been introduced for the network edge. So right now, what about, if you talk about network edges, okay, so let me just go on the, so there are some network challenges that we face right now, and that is scale. If you talk about scale, what is scale? A scale is something that is part of the how much, like for example, if you're talking about what is scalability, what is scalability of a data, what is scalability of this data, is it authentic, is it something like scalable, it's we are able to just it's not challengeable, it's not something that is it's authentic. So this is where scale comes over here. Okay, now what is security? Security is some different top sort of like devices and so different sort of mechanism have been right now using for it. For example, if you heard about IPS or IDS, to make sure that all the security parameters, that for example, if I'm connected with my tablet, for example, I'm connected with my internet. So I have been, for example, there is a risk of intruder, there is a risk of that something that also can attack on my device, and through my devices, it can be attacked by some like my servers. So it's something like different sort of antivirus, different sort of firewalls have been implemented to make sure every data is like have been passed through that like the authenticity of or scalability through all the project or that in data integration, and it is secure. That is security. Now, what about data? For example, if I'm just getting like data is authentic. It's like it's literally if you have probably a lot of data available on Google and everything. Is it authentic? So this is data. So all the data that you're getting, they are like they are authentic. They are actually if through a proper resource or through a proper like sources. So this is how data. So these are the network challenges, and they are facing, and they are mitigating it, and they are just making sure that all these three parameters, and there are more parameters right now. So every parameter is right now we can see it, and we can literally actually know that it's all authentic and all passes through this challenge, and all the challenges has been we can just go through it, and we can just make sure that it's everything is authentic. Okay, now let's move to the second point. Okay, this is how actually what this diagram is look like. And if you talk about this is internet, this is LAN, WAN, and this is all the like for example, how these devices are actually connected. Like if you talk about network edge, like there are different devices that are connected to it. For example, like sensors, there are different sort of everything. Like for example,
if I talk about my data centers, okay, like I have list of different like equipments, and I have just put a different sensor over here, and I get an alert from it. And this alert, how it does work, it goes through my data center, through my layers, and then it passes to the internet, and then it receives to me. So this is how it's operatable. Like for example, you can see over here, this is internet, this is all mechanism, the core layer is working, and it's a LAN environment, this is distribution layer, it's like access layer working over here. And right now, these are the devices that are connected. For example, my tablet, my computer, my laptop, and my different topics. So like for a water sensor, for example, if I'm in my home right now, I have sensor right now, like that makes that all my like tank is full, and it will generate and sense like a message. So it will make sure that everything is like it's not empty, it's half empty, it's full empty. It will show each and every alert of it. So this is how it's interoperable. So this is now, it's a unique world, and if we are going beyond this expectation that it will go this in at that level. So now moving further, this is the how diagram is like you can see over here. There are servers, there are different sort of data centers, like servers connected to data centers, and this is how like reporting is generating, analysis is going on, and this is internet over here. Okay, so let's move further. Okay, like smart edge. If you talk about smart edge devices, like normally in network edge, if you talk about cloud computing and lots of things going on. So if you talk about smart edges, like they are different things. For example, like if you talk about smart edges, there are different things going on. For example, smart edge. Now let's talk about what is smart edge is. Okay, so like factories, like there are different factories, and every factory right now, to be honest, like which you call it in the normal term is more professional. They are have sensors enabled for like different machines. They have just buy it, and they have enabled with sensors. And for example, if for example the temperature of that like temperature of that pipe of anything, like any fertilizer company or anything is going beyond it, so it will just get an alert. These are smart edge devices, and it will just report to the supervisor, and if the alert will receive, and it will immediately take an action regarding it. So second, building. If you talk about buildings, okay, and like there are a lot of building, like for example, and for the administrative point, if I'm in charge of administrative building, like any building, so I want to enable with sensor, like fire sensor, it will just get an alert. For example, something as like, for example, if something is like enormously is triggered up, or it's something that is like I'm like facing some issues, and I'm not able to find out, it will just get an alert, and I will just read it, and I just get a report, and I will just report it to my, so like the vendor that these are the building, and I'm getting alert, so kindly just immediately take an action regarding it. So these are sensors and different like light sensor. For example, if you want that at 8 o'clock, like 6 o'clock, then normally like office close at 6 o'clock, you wanted to just make sure that it will be, all the light will be closed automatically. I don't need anyone. I need only a security guard who will just lock it up, for example, in any, like in case, for example. So it will automatically, so their sensor, it will automatically just off all the lights. So this is a building, like this is a smart edges divider are working on a building. Like for example, smart creature. For example, you have heard like feeding, like for example, like feeding of the like hens, and there's a lot of farmhouse going on, and they are doing it. So they are like sensor enabled at best, like how much like feed has been given to the for the animal, and how much their unique report has been generated through it. So this is all smart creatures, smart edge devices that have been able to just get it. These are the like benefits of the like all the devices that we are getting, and these are the like layers that have been followed. It's all layer. Like for example, if your basic is strong and in all this aspect, you are able to understand how these devices work effectively. Okay. Now moving further, roadways. Like most of the people, when we talk about roadways, they give an example of Saudi Arabia. And for example, now in Pakistan, it's not implemented, and they are smart camera sensor enabled. Like for example, if you trigger up like almost 120 degrees centigrade, like in Lahore, it's implemented as well. Like, and it will definitely give an alert to your mobile that you have been bypassed this rule, and you have been like immediately given notice about it, and you will give a challan, which we call it over here. So this is the roadways, like smart edges devices are working over here. And this is like through mobile, you're getting mobile internet everywhere. Through internet is a basic key of this. Okay. Now, conclusion. Like let's talk about a conclusion. For example, what are the effectiveness of this
all these devices, network edges, like talk about devices. Okay, like internet is the first thing, and in the COVID-19, people actually understand the significance of internet, the power of internet. Like if you don't have internet, you are useless and you are not able to connect with it. And there's things that needs to be learned to it. And for example, let's think, for example, like let me talk about the devices that have been introduced for the future 5G. Like it's going on beyond our level. It's going 400 MB, like in Saudi Arabia and like in everywhere in the world have implemented. They are like using actually like 400 MB. Yes, you cannot expect 100 MB, 200 MB, 3 MB. So I like literally when I talk to my people who are socially connected with it, and they just talk about it like I'm using this type of speed, and I was shocked about it. Right now we are limited at like 200, 300, but right now they're using 500 in their home, through which like fiber is connected like through 5G, like through wireless. Like for the medium of the physical is fiber, and fiber is, you heard about it, F2H, and the fiber to home. Now we are able to have even to have fiber at a home, and you cannot expect that how much speed we are getting. This is technology. This is something that is internet is providing us, and this is the something that innovation is going